इतनी है. So we will be now looking into the XAT का score versus percentile on an overall level. I've already made a couple of videos on the XAT analysis. जहाँ पे also talked about what is the bare minimum percentile that you would need to clear the cutoff as far as that section is concerned. Now let's talk about the overall cutoff as far as the programs are concerned. So yeah, I think if we have a rational approach towards this. Definitely जहाँ तक BM का सवाल है, for male and female the cutoffs would not be varying a lot, so I would take it with a pinch of salt that 95 is what I expect considering the current level of difficulty of XAT. So BM के लिए male cutoff should be 95, for female it should be around about 92. Verbal के लिए अगर हम बात करेंगे it should be 75, डिसीजन मेकिंग 74, क्वांट्स 83. इसके ऊपर कभी गया नहीं है, सो आई डोंट एक्सपेक्ट इसके ऊपर ये जाएगा, बट इट शुड बी द मैक्स लिमिट, द कैप जहां पे हम बात करते हैं 83 तक चलना चाहिए, उसके ऊपर नहीं जा सकता. फीमेल के बारे में अगर हम बात करेंगे, फॉर BM द कट ऑफ शुड बी अराउंड अबाउट 70, फॉर डिसीजन मेकिंग शुड बी 70 एंड क्वांट्स शुड बी 75. आई हैव अ स्ट्रॉन्ग gut feeling that probably there might be a case that it might come down by a percentile as far as verbal and DM is concerned, but as far as the quants is concerned, it should be intact. There should not be any changes as such. Moving ahead, for HRM cutoffs के बारे में अगर हम बात करेंगे, so again there are a couple of categories that we talk about, which is male engineer. I think for male engineer overall should be 93. Again, this might be there might be a chance that this might hit 94, but I think 93 is a decent number looking at the last 3 to 4 years का analysis. So I think ये 93-94 के बीच में range करेगा, इसके ऊपर जाने की chances मुझे लगते नहीं है as far as HRM is concerned. And for different categories के बारे में अगर हम बात करेंगे, male non engineer it should be around 90. Overall आप एक बार देख लेना, verbal I think for male engineer it should be 80, 75, 83. For non-engineering candidates, it should be 75, 70, 74. So this is the range that I'm looking at. Now, when we talk about female engineering, again, if you see here, compared to your business management, the cutoff for quants for HRM categorically are pretty lower side, right? Because that's how the Excel do the evaluation. Female engineer should be 80, 75, 73 as far as quants is concerned, and female non-engineer verbal should be 75, DM should be 68, and quant should be 64, should be around about 87. Now I do not expect this to touch 85ish as such, but I think 87 is a pretty good number to kind of get a call from XLR. Now let's go ahead and understand कि यार ओवरऑल सिनेरियो क्या हो सकता है as far as your cutoffs are concerned. Again, let me give you a sort of a disclaimer. मैं यहाँ पे रेंज दे रहा हूँ because it is not going to be possible यार guys कि exact number हम प्रोड्यूस करें. Again, it's sort of an guesstimation or estimation that you can call it as, or sort of a forecast you can call it as. Now, my expected cutoff are like this. I mean, definitely different people will have different view, but I think जहाँ तक 99 का सवाल है, I think एक रेंज के बारे में अगर मैं बात करूँ, I can only give you range. I cannot be really 100% sure कि what इतने भी इतना आएगा, right? But yeah, the range is 35-36 should be fetching you around about 99. I'm quite convinced about this कि अगर कोई बच्चा 36.25 तक भी चलता है, 99 के जोन में वो आ सकता है, दैट इज फॉर श्योर. इसलिए मैं आपको यहाँ पे एक रेंज दे रहा हूँ 97. आई थिंक 32 से लेके 33. सो दिस माइट बी गाइस 33.25 भी हो सकता है, या फिर प्रॉब्ली ये 32.75 भी हो सकता है. बट आप एक गॉज कर सकते हो कि यार आपका स्कोर कहाँ तक बैठ सकता है. एक रेंज आपको पता चलेगी, देन यू कैन अंडरस्टैंड वेयर यू आर एक्चुअली स्टैंडिंग. अगेन ऑन दी अदर हैंड, अगर हम एक लॉजिकल बात करें, मान लो यार अगर ये 32 पे, हाँ 32 पे अगर अपने को 96 भी आता है, फिर भी यार तुमको कॉल आना ही आना है. यू गेटिंग द पॉइंट? बिकॉज एक लॉजिक ये है कि अगर आप 96 लाते हो, डेफिनेटली आपको सेक्शनल कट ऑफ जो है वो क्लियर करने पड़ेंगे XAT की. किसके लिए? फॉर XLRI न्यू दिल्ली, फॉर XLRI जमशेदपुर, फॉर XIM भुवनेश्वर, राइट? तो इनके लिए आपको सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करनी ही पड़ेंगे, बट बाकी के लिए तो कोई ऐसा फर्क पड़ता है नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट. सो देयर माइट बी अ सिनेरियो that you might get 96 percentile or 97 percentile and you lack in one of the section. There might be a possibility कि आप एक आध सेक्शन में आपका कट ऑफ क्लियर ना हो, so you can get these non, the IIMs that we talk about, which is nothing but KJ and IMI Delhi and IMT Ghaziabad and MICA and something like that, right? You are still tend to get those calls, but again, this will be like a sort of a range जहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ. 32-33 is a good number मेरे ख्याल से. 95 is 31 plus. I think this should be a good number. Again, there are two things that I believe. मुझे नहीं लगता ये कैप लेवल पे चलेगा. I think 31 should be a cap level. नीचे जाके ये कितना जा सकता है? I guess 30.25 या 30.50 should be the range for 95. मुझे लगता नहीं है गाइस इसकी नीचे 95 जाना चाहिए.
चांसेस बहुत ज़्यादा कम है. 29 plus plus is a good number for fetching 90 percentile. 24 plus plus is a good number for 85. 24 plus plus का मतलब है 29 plus plus का मतलब है it's 29 or plus plus, like so मतलब greater than or equal to. I think you guys are sorted as far as your 90th and 85th percentile is concerned. 80 percentile should be on 22 marks, 70 should be 20 and 50 के बारे में बात नहीं करें तो ये अच्छा है 14. बट मेरे ख्याल से if you are above this bracket, you are good to get a call from lot of institutes other than Excel, Jamshedpur, New Delhi and XAT by the way. But yeah, I think you should be good to get a call. Now अगर आपको 90 percentile पे चलना है, your overall should be around about 29. Then you can understand कि यार मुझे अगर 90 चलना है तो at least मुझे let's just say 9-10 के combination में मुझे चलना पड़ेगा. बिकॉज मुझे लगता नहीं एट एनी पॉइंट इन टाइम, अगर मैं बात करूँ तुम्हारे वर्बल के बारे में, अगर मैं बात करूँ डिसीजन मेकिंग के बारे में, या फिर इवन आई टॉक अबाउट क्वांट्स, सी गाइस आई डोंट थिंक दैट 9 इज अ बैड नंबर to clear the cutoff. So if anybody has a confidence कि भाई मुझे 9 तो आने ही वाला है सेक्शनल में, guys you are good to go ahead and you are good to clear the cutoff. You are in absolutely safe zone. On the other hand, even if you talk about the worst scenario, that is 8.5 or let's just say sometimes 8.25 बहुत ज़्यादा edge पे आ जाएगा, बहुत ज़्यादा border है, फिर threshold पे आ जाएगा. But even if you talk about 8.5, this is a pretty good number for you to clear everybody, rather every section का cut off. Quants के लिए भी हो सकता है, मेरे ख्याल से 9 plus is a good number for quants. So guys, ये रहा मेरा overall analysis आपके लिए. I hope आपको ये सही लगा हो. आंसर की कुछ लोग कह रहे हैं कि आंसर की आ चुकी है, बट यार मुझे बड़ा वियर्ड लगा बिकॉज आंसर की रिस्पॉन्स शीट जैट ने दी है, but there is no correct answers which are been given, if I'm not wrong, right? So it's only the thing that you can see is that what you have marked or the entire question paper, but there is no answers to be given. I don't know what they really want to do, but anyway, this is my final analysis. I've made a couple of videos. You can comment जो भी आपको सही लगे कि सर मुझे लगता है कि आपका थोड़ा सा कट ऑफ थोड़ा सा ऑफ है, या फिर यू आर स्पॉट ऑन, या फिर थोड़े से ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो. सो व्हाटएवर यू हैव एज अ पॉइंट ऑफ व्यू, आई वुड लव टू सी दोस कमेंट्स फ्रॉम यार. आप मुझसे अगर एंगेज होना चाहते हो तो डेफिनेटली एंगेज हो सकते हो. आई लव टू सी स्टूडेंट्स टॉकिंग टू मी. एंड गाइस दैट्स इट फ्रॉम माय साइड. आई होप दिस हेल्प्स. टेक केयर. बाय बाय.